Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Alhamdulillah, today my husband has returned home from the hospital and has a bit of a problem with his stomach because he rarely drinks and thinks a lot and is stressed and doesn't get enough sleep. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर वापस आ गए हैं। ये भी गई हुई थी, बल्कि घर जा रही थी, वापस घर छोड़ के जा रही थी, तो मुझे भी अचानक जो है वो वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ी हॉस्पिटल से। जो है ना, मैं छुट्टी लेके आ गया हूँ। अभी कंडीशन जो है ना मेरी ये है कि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, और इसके अलावा जो है मतलब पेट में भी तकलीफ़ है। मेडिसिन वगैरह तो मैंने खाई है, अभी भी खाई हुई है मेडिसिन वगैरह। रेस्ट करना था तो मैंने बाहर निकला हवा लगवाने के लिए। अभी बारिश शुरू हो गई तो हम लोग इधर आके बैठ गए हैं, ये कपड़े वगैरह कर रही थी। तो अभी मेडिसिन वगैरह जो है वो चल रही हैं तकरीबन। मेरे हिसाब से जो डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे थे वो जिगर का प्रॉब्लम बता रहे थे। जिगर का तो वो कह रहे थे जिगर में पथरी है, लेकिन अगर जिगर में तो पथरी मैंने सुना है कि होती नहीं है। वो कहते जिगर में कहाँ से आई पथरी, तो ये भी मसला है। और बाकी मैं वो मामला नहीं डिस्कस करना चाहता, बीवी ने मुझे क्या मारा है, क्या लगा है, बस जो किए उन्होंने वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। मारा है, ज़रूर मारा है, जो चीज़ मारी है, क्या मारी है, छुरी चाकू, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बात करूँगा। और मेरे ख़्याल से जो है ना मेरी बीवी की जो है ना इसमें इंसल्ट है, तो मैं नहीं चाह रहा कि इस बारे में बात करूँ मैं। बहरहाल बाकी भी मुझे प्रॉब्लम थे कि जो है वो टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा काम, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करने की वजह से भी। और यकीन माने कि अगर आप एक मर्द की हैसियत से सोचें ना, तो लड़कियाँ भी कुछ कमेंट कर रही थी कि आपने फीलिंग्स के साथ खेला, ये किया वो किया। यार वो समझती हैं कि मर्दों की कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो समझती है मैंने 2-2 शादियाँ की हैं, क्यों की हैं। आपको वजह खुद पता चल जाएगी अगर मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे आप लोग व्लॉग मेरे देखें, तो आप लोग को सबको वजह खुद पता चल जाएगी कि क्यों की है शादी और क्या मुझे वाकई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ छोड़ें। अभी जो फ़िलहाल की कंडीशन है वो कह रहे हैं कि पथरी है, स्टोन्स हैं, लॉट्स ऑफ स्टोन्स एंड गॉल ब्लैडर यानी जिगर। लेकिन मेरी फैमिली से मैंने जब बात की, वो कह रहे तो स्टोन नहीं होते, इसे टीबीसी कहते हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज में टीबीसी कहते हैं। अब वो कहते हैं टीबीसी भी नहीं है, कह रहे हैं। तो मैंने कहा है क्या, मुझे बताओ, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही। वो कह रहे बात तो एम्पटू, अब बात तो एम्पटू पथरी है, और पाकिस्तान में हम इस चीज़ को नहीं मानते कि जिगर में भी स्टोन होता है। अब आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाकी ये भी चली गई थी, बड़ी मुश्किल से इसको वापस लेके आया हूँ मैं, और इधर रेस्ट के लिए आया हूँ मैं कि थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं इंशाल्लाह। तो मेरे फैमिली वाले बहुत सारे जो है ना, जो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, लेकिन मैं कॉल उठा नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि मैं अपडेट दे दूँ कि कहाँ तक मेरी हेल्थ कैसी रही है, क्या हुआ है। तो वो मेरी वीडियोज़ वगैरह मेरी फैमिलीज़ देखती हैं, तो अभी ठीक हूँ मैं, आप लोग परेशान ना हूँ बिल्कुल इंशाल्लाह। और अभी ट्रीटमेंट तो चलेगा भाई, 6 महीने चलेगा ट्रीटमेंट, क्योंकि चक्कर बहुत आते हैं। पानी शानी कम पीता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि कम से कम दिन में 3 लीटर जो है आप पानी पियो। तो मैं दिन में 1 लीटर भी मुश्किल से पीता हूँ पानी, जो है ना 1 लीटर भी, बल्कि 1 लीटर क्या 1 पाव भी मुश्किल से पानी पीता हूँ मैं गाइस। सो इस वजह से भी अभी बारिशें हैं। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया के अंदर मौसम जो है वो बहुत ठंडा होता है, तो ठंडे मौसम की वजह से जो है ना प्यास नहीं लगती, तो इस वजह से पानी सारा दिन नहीं पीते, जूस पीते रहते। बाकी मेरी आदत है, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं नस्वा रखता हूँ, ना मैं कोई बीड़ा पीता हूँ, ना मैं कोई और किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ जो यानी कि ड्रग्स के रिलेटेड होती है, कुछ भी नहीं करता मैं। अगर मैं इंडोनेशियन की बात करूँ तो यहाँ के मर्द इतनी सिगरेट पीते हैं, इतनी सिगरेट, उसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं जब
हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ पे सारे के सारे मरीज सिगरेट पीने वाले थे। वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे वो सिगरेट पीने वाले पेशेंट वहाँ पे थे, इसके अलावा और कोई भी नहीं था. Yani kis di rumah sakit aku lihat semua orang sakit karena rokok. Tapi aku kan nggak minum rokok, nggak itu, kan nothing. Yes. I can pista you say you kena TBC. Iya. Apa? TBC setahu aku orang TBC itu orang yang smoking. Terus ya seperti pep seperti itu. Oh. Kan aku TBC भाषा इंडोनेशियन में TBC कहते हैं टीबी को. यस. kalau bahasa Pakistan TB itu nama. TB. Kalau bahasa Indonesia TBC kan. Ayo pakai C. C. Pakai C. C. kan kalau ini C A को B C पढ़ते हैं. हाँ C को C पढ़ते हैं ना. तो ये भी यही कह रही है कि TBC है. मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, TB कहाँ से आ गया. kira pila yarkan, kalau bahasa Urdu itu nama pila yarkan. Tapi aku gak ada, mungkin kan gak ada yang itu TB. Tapi ada batu empedu, nanti insyaallah ada obat dari Pakistan juga. Teman aku bilang aku bawa obat. मैंने एक दोस्त को बोला, वो कह रहे मेरे पास दवाई है पाकिस्तान से, मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए. मैंने कहा यार उधर ही किसी को हकीकत से हकीकत दे के बता के दवाई कोई देसी है तो वो ले आओ. वो कह रहे हैं कि चावल बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, इधर चावल बहुत ज़्यादा होते हैं. राइस yes, bahkan banyak nasi, terus lagi gak minum air juga kan seperti itu. Yes, nasi seperti minyak. या nasi minyak तेल वाले चावल. लेकिन इधर ऑयल जो है वो अच्छा होता है. di sini lebih bagus dari Pakistan kalau oily. Di sini kan oily yang palm oil, itu palm oil no problem I think. हमारा जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादा घी चलता ना, देसी घी चलता है. water. हाँ बस मसला यही था, पानी ना पीने की वजह से. और बहुत ज़्यादा यानी guys. Terus kalau TBC di mana Indonesia? Berapa lama orang minum obat? Kalau TBC itu seperti apa, kayak orang kayak gini kalau jalan. Oh gitu. Ini kecil kayak ini kan ini. Iya. Terus dia jalan kayak gini. Kalau TBC gitu. Oh gini. Iya. Oh. अगर TBC हो जाए इंडोनेशिया में भाई, उसकी अलामत है कि मतलब बंदा जो है ना यूं करके चलता है, मतलब के oh like this. Karena itu hampir TBC. You kan nama smoking, why kena TBC? Yeah. No problem. I start smoking. No lah. You aja no smoking aja. Dokter say you kena TBC, gimana you smoking? I think bad lah. Bad. No, not smoking. Yes. Smoking not good. Not good. Oh. चलो ये कह रही है सिगरेट आप नहीं पीनी. मैं कहा पहले तो नहीं पीता, आप शुरू कर दूं. मैंने कहा वो बन जाऊँ ना, इश्क दे रोग लग जान सजना नो, इश्क दे रोग. अच्छा दिमाग खुश्क हुआ है काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा. दिस इज कपाल मी वेरी ड्राई. Darah juga itu low. Darah blood pressure very low. Blood low. हाँ. This is no good. Misalnya not sleeping. Misalnya kalau aku pukul kamu jangan marah, oke? Orang yang suka pukul itu orang yang blood high. Oh, blood high. Biasanya sakit. Itu blood high. Tapi orang blood low ya seperti orang no tenaga. Kayak gini aja pukul gini tisha. Nggak ada tenaga, orang yang nggak ada darah. No energy. Blood low, no energy. Oh, no energy. Why dia pukul-pukul? Yes, gak bisa kan ini. Ada masih sakit ini. sakit tangan. Yes, वजनी. मर्द का हाथ भारी होता है बहुत ज़्यादा. sakit lah. बहुत ज़्यादा वजनी होता है मर्द का हाथ, है ना. हाँ. मार खानी है दोबारा. गमाओ. Enggak lah, no good. Okay. Kalau angry. Masak apa kamu? Aku mau pergi ya. Okay guys. Okay guys. Okay everyone.
Sorry, I didn't have time to make food today because these past few days I've been very busy and haven't had time to go to the market. And I will tell my story and speak up because I'm tired and I don't want to be insulted anymore. And from the time I was 3 months pregnant, this woman started problems. Until she came to my house first and destroyed the contents of my house at night. And I thought that night he had finished taking my things, but in the morning he came again and made a scene until my neighbors heard the commotion. I was so embarrassed at that time. Before the incident, he came to my house that night. He argued with my husband and took his things, and my husband went to his friend's place wearing my clothes. After the incident at my house that morning, my husband called to come to him so that I would be safe because I was pregnant with this old woman. She was crazy. She could come at any time. And what's even crazier is that this old woman took my husband's money from his account and my husband and I slept on the street for 3 days while I was 7 months pregnant. After finding out that all his money had been taken, my husband cried on the street and fell down. And we are grateful that Allah did not sleep. He saw us for several days. We received sustenance from the person who helped us. Then we rented an apartment for 1 month. And before it was even 1 month, this woman made another period and found us. She said to the apartment people that she had lost her husband and she humiliated us again, and we were evicted from that apartment. And this woman cried, crying, asking my husband for forgiveness. He would not do it again. But because my husband is very soft-hearted, he forgave this woman again, and we looked for another house and she did the same thing again. And my husband, before returning to his country, the woman who always threatened to put him in prison and deport him until my husband felt anxious. I think it is natural that my husband is anxious because he is a foreigner and this woman is very, very crazy. And when my husband had arrived in his country and I was alone at home, 9 months pregnant, this woman in the middle of the night tried to open my door like a thief. She forced her way in, but I was quiet because I was afraid. Maybe she would bring a weapon or she could kill me. It was natural for me to think like that because I was alone. He will continue to threaten if my husband does not choose him. When I gave birth on August 22nd, I was alone and with my friend, just the two of us. Everyone in the hospital looked at us with pity because my family was also far away. Because everything was so sudden, it was time to give birth. Sebelumnya dokter yang memeriksa aku akan lahir bulan September, ternyata bulan Agustus. Karena aku ada masalah pada perutku dan harus cepat ditangani di operasi. Previously, the doctor who examined me said that I would be born in September, but it turned out to be August because I had a problem with my stomach and it had to be treated quickly in surgery. And this old woman without any sin, she immediately entered my room and the security guard was confused. Who was she? She was carrying my child without any sin. I was very hurt and will not forget all her actions. Only he took photos of my child without my permission, and he told his friends that he was the one who helped me in the hospital.
Why did he do that? So that other people would see, oh, he's good because he helped his husband's wife, and his friends think I'm the one who's mean to him. 2 days after the birth of my child, my distant family came to see me, and I said before to this old woman who had come to my house, because my family doesn't like you because you have threatened my family. About what sin? And without a guilty face and no intention of apologizing to my family, he came to my house and took photos of us there. The family didn't wear the hijab and I was breastfeeding my child. He took photos of us in silence. What's crazy is that he complained to my husband that my mother threw him out and threw a knife at him. Even though my mother was sitting and silent near me, this old woman really liked to slander me. And the funny thing is, she took my husband's motorbike secretly. Even though my sister and I were at home, because my mother had gone home to the village, my sister accompanied me. This old woman took the motorbike like a thief with her 30-year-old son. He really doesn't have a good attitude. He tells people he's a doctor, but why is his marriage so unethical? And I found out he's not a doctor. He's an admin at the hospital. If he is a doctor, try asking him for a medical certificate if it is true. Never mind, I don't care what he does to himself. I just ask that you don't bother me and my child because I just had surgery. And my husband told me to look for a new house far away so that he couldn't find me and come as he pleased and embarrass me. And it turned out he found me again, and he looked for information and embarrassed me again for the umpteenth time. And I'm so emotional that even my stomach stitches haven't dried yet. He's been making trouble and trouble all the time. He always relies on his marriage certificate. He always tells people that she's his legal wife and always embarrasses me in front of many people. I used to respect him because he was the same age as my mother. I respected him a lot, but now he has crossed the limit of my patience because he has threatened my family many times. I don't know why she always bothers me and bothers my child, even though her previous husband had 2 wives, and she has 4 children from her previous husband. Never mind, that's his business. I just ask you not to keep making this drama. Please stop. I want to live a normal life with my family. And don't judge me wrongly if I tell you everything. Actually, from the start, I felt that you were not young to talk like that. I will ask you whether you accept your son marrying a 60-year-old woman. Do you accept your child being enslaved to support other people's children even though their father is still alive? You want your son to have no future? You want your son to be enslaved, to find money and spend it on unimportant things? Spend it on lifestyle? Okay guys, I hope this clarification is the last, and I hope there is no more drama when making this content. For positive content, there is no drama. I want to spread positive content providing new knowledge. Please support me and positive and good comments. Okay guys, don't forget to follow, don't forget to subscribe and like, comment and share. Thank you guys. Assalamualaikum.